Translation. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, the super soul in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee, whereas though develop the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Purport. Messages of the personality of God, that Sri Krishna are non-different from him. Whenever therefore offenseless hearing and glorification of God are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally. Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Sikshastika declares clearly that the holy name of the Lord has all the potencies of the Lord, and he has endowed his innumerable names with the same potency. There is no rigid fixture of time, and anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. The Lord is so kind to us that he can be present before us personally in the form of transcendental sound, but unfortunately we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities. We have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy sound. It is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. The Lord is reciprocally respondent to his devotees when he sees that a devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord, and thus become eager to hear about him. The Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. The Lord is more anxious to take us back into his kingdom than we can desire. Most of us do not desire to go back to Godhead. Only a very few men want to go back to Godhead. But anyone who desires to go back to Godhead, Sri Krishna helps in all respects. One can enter into the kingdom of God unless one is perfectly cleared of all sins. The material sins are products of our desires to lord it over material nature. It is very difficult to get rid of such desires. Women and wealth are difficult problems for the devotee making progress on the path back to Godhead. Many stalwarts in the devotional line fell victim to the allurements and thus retreated from the path of liberation. When one is helped by the Lord himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord. To become restless in contact of women and wealth is not an astonishment, because every living being is associated with such things from remote time, practically immemorial, and it takes time to recover from this foreign nature. But if one is engaged in hearing the glories of the Lord, gradually he realizes his real position. By the grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbances, and gradually all disturbing elements are eliminated from his mind. Chichitaya manopistam stapitam yena bhutalishvam rupkadamyam dadati svapadantikam. Vandeham shiyo shiyodapadakamam shigam vaishnavam sha. Shirupam jagajatam sagan ragnatam vitam tam sajivam sadvaitam savurutam parjana saitam cha Krishna Chaitanya devam. Shri Radha Krishna padam saganalita shivshakam vitam sha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jatpate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Namostute.
Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavana Sutta Devi Pranamama Haripriya. Vancha Kalpta Visha Kripa Sindhu Visha Patnam Bhavanabhyo Vaishnavyo Namo Namo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namani. Namaste Saraswata Devi Gauravani Pacharani Nirvishesha Srinyavadi Paskachari Desatarni Srila Prabhupada Ki. In the Bhagavad Gita, in the 16th chapter, Krishna starts the 16th chapter with giving a list of divine qualities. And the first line is Abhaya Sattva Samsuddhir, fearlessness and purification of one's existence. These are the qualities of a sannyasi, a member of the renounced order. But all devotees must develop these qualities to make spiritual advancement. Everyone must finally take sannyas in the heart. Sannyas means using body, mind and words in the service of the Lord. That at all times. But body, minds, and words. But this sattva samstutir, striving for purification of one's existence, is very important. We must want to be purified. We must know what's the contamination from our heart. And we must want to become purified. If we don't want, it will not happen. Krishna reciprocates with our desire. Because Krishna consciousness is a change of desire. A change from trying to exploit this material world. This scarcity we heard yesterday, struggling for existence. That is very problematic. But how to purify the heart? First, desire. Desire to become purified means Krishna consciousness is a change of desire. Translation. Oh, you want to translate? Okay. Translation का जरूरत है ना? नहीं. सो जाओगे नहीं तो सो जाए. आ रहा समझ में? हाँ? आ रहा है. ठीक है, लास्ट एक को नहीं आ रहा है. और किसको नहीं आ रहा है? Anybody else? नहीं आ रहा, निखिल प्रो को नहीं. हाँ, ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, ट्रांसलेट कर देते हैं ना टाइम पे. तो महाराज जी बताएं शॉर्ट में फटा. भगवद गीता के 16वें अध्याय अव्यय सत्व संस्कृति में बताया गया जो डेमन क्वालिटी है और डिवाइन क्वालिटीज के बारे में बताया गया. और फिर संन्यास के बारे में महाराज बताए. तो महाराज बताना ये चाहते हैं कि किस तरीके से सत्व शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन जो है एक जीव का धर्म एक तरीके से होना चाहिए. सभी को स्वयं का शुद्धिकरण करना चाहिए. तो वो कैसे करें? Krishna consciousness means a change of desire. We have to go from a desire to exploit this material world for our own self, this egoistic desire. We must come to the desire to serve Krishna out of love, which is a selfless desire. सबसे पहले शुद्धिकरण का प्रोसेस है इच्छा. हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए. अगर हमारे अंदर इच्छा है भगवान की सेवा करने की तो in this verse today, it's Krishna's reciprocation is
explained how he is purifying our heart. इस श्लोक में बताया गया कैसे कृष्ण जो है हमारा हृदय शुद्ध करते हैं. Krishna is the only one who can purify our heart. कृष्ण ही एकमात्र है जो हमारे हृदय को शुद्ध कर सकते हैं. Nobody else can do that. और कोई नहीं कर सकता. That Lord Brahma, Lord Shiva, whoever it is, cannot purify our heart. ब्रह्मा शिवा ये लोग कोई हृदय शुद्ध नहीं कर सकते. Because they are not situated in our heart. क्योंकि वो हृदय में है ही नहीं. Only Krishna is all pervading and is in our heart. कृष्ण ही सब जगह विद्यमान है और हृदय में विद्यमान है. So it's explained in Bhagavad Gita that Tesham satyuknam bhatsam pitgokam dadami buddhyogam tam yenamam upayantite. When one serves me with a little love, Krishna says. भगवद्गीता में कहा गया है कि तेषां सत्ययुक्तानां कि किस तरीके से कोई मुझे अगर सेवा करता है तो वो अपने भगवान को बुद्धि देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं. So, Priti Purvakam is a little love. जो प्रीति पूर्वकम है वो Little love. प्रेम प्रेम से आता So serving Krishna with a little love. कृष्ण की सेवा प्रेम के साथ. What's Krishna's reciprocation? फिर कृष्ण Dadami is going to give us something. कृष्ण में फिर कुछ देंगे. He's given us Buddhi Yoga. कृष्ण में बुद्धि देंगे. बुद्धि योग की बात. What is this Buddhi Yoga? क्या है ये बुद्धि योग? This Buddhi Yoga is the purification of our heart. ये बुद्धि योग और कुछ नहीं, हृदय का शुद्धिकरण है. But first we must serve him with a little love. लेकिन उसके लिए कुछ प्रेम से भगवान की सेवा तो करें. But in our conditioned state we are not able to do that. लेकिन हम अपने बद्ध स्तर पर ये नहीं कर सकते. We don't know what's love. हमें पता ही नहीं प्रेम क्या है. We think of love something of the lust between men and women in this world. हमें तो प्रेम एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो काम है वो समझ में आता है. But transcendental love is nothing to do with it. पर दिव्य प्रेम तो समझ में नहीं आता. Transcendental love means serving the Supreme Lord दिव्य प्रेम तो भगवान की सेवा करना है. out of love, प्रेम से, without asking anything in return. कुछ वापस ही कुछ इच्छा नहीं रखना. So not wanting, not serving Krishna to go back to the spiritual world. कुछ पाने के लिए सेवा नहीं करनी चाहिए भगवान की. You may desire that, but that's not the reason why we should serve the Supreme Lord. तो हमारे अंदर इच्छा हो सकती है भगवान दान जाने की, लेकिन इस कारण से भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए. Should serve the Supreme Lord out of love. सिर्फ और सिर्फ भगवान प्रेम के लिए भगवान की सेवा करनी चाहिए. But the problem is, even this Priti Purvakam, we don't have this little love. लेकिन समस्या ये है कि हमारे अंदर थोड़ा प्रेम है ही. But Krishna has made an arrangement. लेकिन कृष्ण ने एक व्यवस्था की है. He delegated his mercy to his pure devotee. उन्होंने अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्रेम प्रदान करते हैं. He delegated his mercy to the spiritual master. वो अपनी कृपा गुरु को देते हैं. And by serving the spiritual master submissively and inquiring from him, और गुरु को सबमिसिवली और प्रेम से जब सेवा करते हैं तो we get Krishna's mercy. तब हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है. But first, we have to serve the spiritual master. लेकिन उसके लिए पहले हमें गुरु की सेवा करनी पड़ेगी. Serving the spiritual master means following his instructions. गुरु की सेवा करना अर्थात उनके आदेशों का पालन करना. What are the instructions of the spiritual master? जो भी उनके निर्देश उनका पालन करना. You chant 16 rounds of the Hare Krishna Mahamantra. महामंत्र का 16 बार जप करना, 16 राउंड जप करना. You follow regulative principles. 4 नियम का पालन करना.
You engage in 64 items of devotional service. भक्ति के 64 अंगों का पालन करना. The 64 items of devotional service are described by Srila Rupa Goswami, one of the direct followers of Lord Chaitanya, in Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu. 64 अंग भक्ति की जो रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए, जो कि चैतन्य महाप्रभु के अन्य भक्त थे, वो भक्ति रसामृत सिंधु एक पुस्तक है, उसमें वर्णन करते हैं. So if one follows the instructions of the spiritual master, यदि कोई गुरु की आदेशों का पालन करता है, Krishna accepts this as priti purvakam, a little love. कृष्ण हमारे उस प्रेम को ग्रहण करते हैं. And then dadami buddhi yogam tam, he will give us realizations from within the heart. फिर कृष्ण हमें बुद्धि योग, बुद्धि देंगे, हृदय से साक्षात्कार करेंगे. Realizations comes when our vidya, our ignorance is removed. साक्षात्कार तब होता है जब हृदय की अविद्या दूर होती है. Conditioned life is based on 5 forms of ignorance. बद्ध अवस्था 5 स्तर की होती है. The first is avidya. पहला अविद्या, We are ignorant of our position as a spirit soul. जो हमें पता नहीं है कि हम आत्मा हैं. That ignorance is caused because we have forgotten Krishna. ये अज्ञानता क्यों है? क्योंकि हमने कृष्ण को भूल गए. And therefore, we have created asmita, false ego. और उसके कारण हमारे हृदय में मिथ्या अहंकार है. False ego means we identify with the body. मिथ्या अहंकार अर्थात हम शरीर से अपने आप को, And we think that enjoying this temporary body, that's the goal of our life. और इस भौतिक शरीर से भोग करना जीवन का सफल है, इसमें मानते हैं. And that causes two further illusions, raga and dvesha, attachment and aversion to things in this world. और इसके कारण और अधिक मोह में फंस जाते हैं, राग और द्वेष. And that causes the fifth point of ignorance, the fifth illusion, which is abhinivesha. इस राग द्वेष के कारण अभिनिवेश, स्तर का अज्ञानता है. We think I'm going to die, हमें लगता है कि हम मरने वाले हैं, but the soul is eternal. लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती. To remove these 5 forms of ignorance, तो ये 5 प्रकार की अज्ञानता को दूर हटाइए. that is what means dadami buddhi yogam tam. इसी का अर्थ है ददामि बुद्धि योगम तम. And in the next verse in Bhagavad Gita, Krishna says, उसके अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं, Tesham evanakampatam amma jnana chamtama nasacham atma bhavastu jnana dipana abhashvata. With the jnana dipana, with the torchlight of knowledge. उसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि तेषाम अनुकंपार्थम, इस श्लोक में कहते हैं कि कैसे ज्ञान रूपी टॉर्च से भगवान हमारे अज्ञानता को दूर करते हैं. With the torchlight of knowledge, Krishna says, I enter the heart of my devotee. ज्ञान रूपी जो टॉर्च है, उससे भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश करता हूँ. And remove his ignorance. और अपने भक्तों की अज्ञानता को दूर करता हूँ. And then, when our ignorance is removed, we realize who we really are. तो जब अज्ञानता जब दूर हो जाती है, तो हम अपने आप साक्षात्कार हो जाता है कि हम कौन हैं. And then we become happy. फिर हम खुश हो जाते हैं. So we are suffering because of the presence of, because we are controlled by the modes of rajas, passion and tamas, ignorance. हम बहुत कष्ट में हैं. क्यों? क्योंकि हम रजोगुण और तमोगुण के अंदर हैं. So Raja Gun makes us
identify with the body. जो रजोगुण है वो हमें यह पहचान दिलाता है कि हम शरीर हैं। It makes us completely insane. ये हमें insane एक बात है। Mad, yeah. That it makes us run after objects of the senses of this world. ये हमें इंद्रियों के इंद्रिय भोग के पीछे दौड़ने के लिए मजबूर करता है। And the highest form of that madness is sexual attraction. और इसकी सर्वोत्तम जो पागलपन है वो है पर सेक्स अट्रैक्शन, It's based on ignorance. जो कि अज्ञानता का कारण है। That, so this is essential teachings. तो ये कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। But sattva samsudhir means one must desire to become purified. सत्य संशोधन अर्थात हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हम शुद्ध हों। That so acting in devotional service means acting for one's purification. भक्ति भक्ति का कार्य अर्थात अपने शुद्धिकरण का कार्य करना। That the devotee wants to become purified. तो वास्तव में भक्त शुद्ध बनना चाहते हैं। Prahlad Maharaj is now in Harivarsha, somewhere in Jambudvip in this universe. प्रहलाद महाराज जो कि हरिवर्ष में जो जम्बूद्वीप में एक हिस्सा है वहाँ पर है। And there he worships for the moment a deity of Lord Nrsimhadev. और वहाँ पे प्रहलाद महाराज नरसिंह देव जी की विग्रह की सेवा करते हैं। And there he prays every day to this deity. वो हर दिन नरसिंह देव जी से प्रार्थना करते हैं। Two of his prayers that he prays every day are mentioned in the Bhagavatam in the 5th canto. उसमें से दो श्लोक श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन है। Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste asya virbhavavachanaka vachadamsta karmasya mradaya tamogasa abhayam abhayam atmani bhistram syam. So, Lord Prahlad Maharaj prays to Lord Nrsimhadev. प्रहलाद महाराज जी प्रार्थना प्राप्त करते हैं और लोग भगवते वसुदेवाय नमः बोलते हैं। ऐसे 5वां स्कंद का Lord Nrsimhadev prays. But Prahlad Maharaj prays. Lord Nrsimhadev, you have these very sharp nails. Lord Prahlad Maharaj prays to Lord Nrsimhadev. My Lord Nrsimhadev, you have these sharp nails. प्रहलाद महाराज says to Nrsimh Dev that my dear Lord, you have प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं आपके ये जो तेज नख हैं With your sharp nails, you go into my heart. इन तेज नखों से आप हमारे मेरे हृदय में जाइए And take all my impurities away. और मेरे जितने भी गंदगी है बाहर निकाल। So that is what we should desire. ऐसे हमारी इच्छा होनी चाहिए। Desire a pure heart. शुद्ध होगी And have the courage to pray to Krishna. Please take it away. और ये हिम्मत होना चाहिए कि हम कृष्ण से प्रार्थना करें कि भगवान सारे अज्ञान जो गंदगी है हृदय से उड़ जाए। Srila Prabhupada writes in the purport of this verse, प्रभुपाद जी इस श्लोक के अंत में व्याख्या करते हैं one should learn to pray like Prahlad Maharaj. एक व्यक्ति को प्रहलाद महाराज की तरह प्रार्थना करनी चाहिए। One should have the courage to pray like this. हिम्मत होना चाहिए प्रहलाद महाराज की तरह Praying to Krishna that please take everything away what's in the way between me and you, so that I can freely
express my love to you. मेरे हृदय से सब अज्ञानता चले जाए पूरी ताकि मैं और आप आपकी पूरी अच्छे से प्रेम कर सकें. So that is very important for us to learn. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें सीखना है. But to come to that state sincerely, लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए one must know what's the contamination of one's heart. एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि आखिर में गंदगी अबंध है क्या. That and one must be surrendered to the spiritual master. और वो अपने गुरु से शरणागत होनी चाहिए. Because without the mercy of the spiritual master, we cannot get the mercy of Krishna. बिना गुरु की कृपा के तो भगवान कृष्ण की कृपा पाना मुश्किल ही है. If you don't have yet a spiritual master, if you don't have yet a spiritual master, गुरु नहीं है, then you have to accept Srila Prabhupada as your spiritual master. यदि गुरु नहीं है तो अभी आप श्रील प्रभुपाद को गुरु मानते हैं. But finally, you need a living spiritual master who can instruct you personally. लेकिन एक लिविंग गुरु की जरूरत पड़ती है जो हमें सिखा सके. Srila Prabhupada gives general instructions. प्रभुपाद जी तो एक जनरल निर्देश देंगे. But our contamination of each of us is different. लेकिन हमारा हृदय की गंदगी हर एक के अंदर अलग अलग है. And therefore, you need specific instructions on how to engage your conditioned nature in Krishna's service to become purified. लेकिन हमारी जो गंदगी स्पेसिफिक है इसलिए हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन चाहिए गुरु से. Therefore, कृष्ण की सेवा करते one needs the shelter of a spiritual master in the Guru Parampara. सभी को और एक व्यक्ति को गुरु परंपरा से शरणागत होना चाहिए. And you can take shelter in this movement of all devotees who are more advanced than you. और वैसे भी आप सभी भक्तों से इस मूवमेंट में सही भक्तों से आप शरणागत से निर्देश ले सकते हैं. But first you must learn who is advanced, who is not advanced. लेकिन आपको इसमें पता करना पड़ेगा कि कौन किस स्तर के हैं और कौन किस स्तर के नहीं. In the beginning we don't know. शुरुआत के स्तर पे हम नहीं जानते. The first 10-15 years of your practice you don't know. शुरुआत में 15 साल आप प्रचार नहीं करेंगे. But you can learn this from Srila Prabhupada's books. लेकिन आप प्रभुपाद की पुस्तक से ये सब सीख सकते हैं. What's a Kanishta, Madhyam and an Uttam Adhikar? कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकार. And what are their characteristics? कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी और बद्ध के अपने कैरेक्टरिस्टिक है. One who is advanced is one who follows very strictly the instructions of the spiritual master. जो जिस तरह के भक्त है वो अपने गुरु के निर्देशों का पालन बहुत कठिन नहीं करता. He follows a very strict sadhana. वो साधना को बहुत ध्यान से पालन करता है. And engages in selfless service to the spiritual master. और वो अपने गुरु की सेवा में नियोजित है. Because this Bhagavatam and Bhagavad Gita you must learn from a self-realized soul. क्योंकि जो भगवद गीता भागवतम है ये हमें एक जो साक्षात्कार व्यक्ति से ही सुनना चाहिए. Because they have become liberated. तभी क्योंकि वो जीव They have done it. उनके पास ध्यान है. They can explain you how to do it. वो हमें अच्छी तरीके से समझा सकते हैं क्या करना है. So that is very important. This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है.
to take the guidance of the devotees. भक्तों से शिक्षा लेना. So I was very happy to be with you. तो मैं आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा. I know many you have studied, मैं जानता हूँ बहुत सारे are studying. आप लोगों में से बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं. I studied 16 years at the university. मैंने भी कॉलेज 16 साल कॉलेज में पढ़ा. I have a few masters and a PhD, मेरे कुछ मास्टर्स और PhD. but it's all useless. What's important is your spiritual advancement. वास्तव में जो जरूरी है बात आध्यात्मिक प्रगति. Then you get a much higher intelligence. तब विशेष बुद्धि मिलती है. That the intelligence of understanding your real situation. ये ऐसी बुद्धि जो हमें खुद बताती है कि हम कौन हैं. And the life of a devotee, if you practice it nicely, यदि आप प्रैक्टिस if you practice it nicely, devotional service, यदि आप भक्ति को अच्छे से पालन करेंगे you will feel happy. आपको अच्छा लगेगा. If you don't feel happy while practicing it, यदि आपको अच्छा नहीं लगेगा then something is wrong. Then something is wrong. You are not practicing properly. आपको आनंद नहीं मिल रहा है तो इसका अर्थ है कि कुछ गड़बड़ है. So therefore it's important to take guidance. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस तरीके से That Srila Prabhupada and the whole Guru Parampara will bless you if you try sincerely your best to follow nicely. श्रील प्रभुपाद और पूरी गुरु परंपरा के ऊपर कृपा करेंगे यदि आप कठोरता से सिंसियरली पालन करते हैं. And finally you will reach the perfection of life. Finally you will reach the perfection of life. और आप जीवन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचे. Thank you very much. Chandra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. Okay. Thanks. I have to leave now. Hare Krishna, so now,